opening movie of IMPHAL. This is a tale showcasing the ship's journey from blueprint to battleship, manufacture to magnificence. A tale encapsulating the transformation from wire and steel to invincible IMPHAL. जलमेव यस्य बलमेव तस्य समुद्री शक्ति व पराक्रम का जीवंत प्रमाण है विध्वंसक युद्धपोत इम्फाल। युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा अभिकल्पित और मस्काउ डॉक लिमिटेड द्वारा निर्मित इम्फाल शौर्य की विरासत को एक सलामी है। अप्रैल 1944 में आजाद हिंद फौज ने इम्फाल के ऐतिहासिक युद्ध में लड़ते हुए पहली बार मुख्य भूमि पर मोइरांग मणिपुर में विजयी तिरंगा फहराया। P-15 ब्रावो श्रेणी की तीसरी कड़ी इम्फाल गाथा है परस्पर सहयोग की। अभिकल्पकारों, निर्माताओं, पर्यवेक्षकों और नौसैनिक बल ने एकजुट हो इस युद्धपोत का निर्माण कर अद्भुत आकार दिया है। इम्फाल भारत के अत्याधुनिक युद्धपोत निर्माण की उच्च कोटि क्षमता का जीवंत प्रमाण है और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के लिए बड़े ही गर्व की बात है। इसके निर्माण में 72% स्वदेशी सामग्री का उपयोग व 600 से भी अधिक एमएसएमई उद्यमों का योगदान आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक विशाल कदम है। 164 मीटर लंबा और 13 मंजिल ऊंचा इम्फाल अत्याधुनिक शस्त्रों व सेंसरों से युक्त समुद्र में अवतरित एक अभेद्य किला है। इम्फाल ने अप्रैल 2023 में समुद्री परीक्षणों की शुरुआत की। अभूतपूर्व सहयोग व सामूहिक कार्यों द्वारा मात्र 3 महीनों में ही उसे युद्ध के लिए पूर्णतः सक्षम करने के पश्चात नौसेना को सौंपा गया। इम्फाल एकमात्र ऐसा युद्धपोत है जिसने अपने प्रवर्तीकरण से पूर्व ही स्वदेशी मिसाइल ब्रह्मोस को टेस्ट फायर किया। अपनी तीव्र गति व सुदूर नौवहन क्षमता के बल पर इम्फाल दीर्घ दूरी के नौसैनिक अभियानों में तैनात होने में सक्षम है। इसके आधुनिक हेलीकॉप्टर शक्ति गुणक साबित होंगे। इम्फाल की बेजोड़ तकनीकी आधुनिकता विशिष्ट पथ प्रदर्शक है। भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की मुहिम में इस शक्तिशाली जहाज का नौसैनिक दल अतुलनीय है। उनकी कार्यकुशलता, साहस और एकजुटता इम्फाल को ऊंचाइयां हासिल करने में पूर्णतः सक्षम करेंगे। इस शक्तिशाली युद्धपोत को कमीशन करना मेरे और मेरी बेहतरीन टीम के लिए सम्मान और गर्व की बात है। हमारे आदर्श वाक्य सदैव तत्पर के अनुरूप इम्फाल हमेशा हर चुनौती के लिए तैयार रहेगा। इम्फाल अपने प्रतीक चिन्ह से प्रेरित है जो कांगला किले के पश्चिमी द्वार और कांगला शाह मणिपुर के पौराणिक संरक्षक को रेखांकित करता है। भारत के उत्तर पूर्वी शहर से पहली बार अपना नाम प्राप्त करने वाला युद्धपोत इम्फाल निसंदेह दुनिया भर में हमारे देश का मान बढ़ाएगा। इम्फाल आपको अपना लक्ष्य सदैव हासिल हो और निशाना अचूक रहे।
देवियों और सज्जनों, समारोह की गरिमा को बनाए रखने के लिए मैं सभी मेहमानों से पुनः अनुरोध करता हूं कि वे अपने मोबाइल को बंद रखें या उन्हें फ्लाइट मोड में रखें। शौचालय आपके सबसे दाहिनी ओर बैठने की जगह के अंत में उपलब्ध है। Ladies and gentlemen, may I request all guests to switch off their mobile phones or keep them in silent mode throughout the ceremony. Restrooms are available on your extreme right at the end of the seating enclosures. On the 14th of April, 1944. जहाज के कमांडिंग ऑफिसर जहाज के कमिश्निंग वारंट को पढ़ेंगे, जिसके बाद वीआईपी निशान समारोह के लिए निशान गार्ड के पीछे पद संभालेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि निशान समारोह के दौरान कृपया खड़े रहें। जब बैंड राष्ट्रगान बजाता है तो वर्दीधारियों से अनुरोध है कि वे राष्ट्र ध्वज को सलामी दें। राष्ट्रगान की शुरुआत के साथ नौसेना ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज और कमिश्निंग पेनेंट को Let us now run you through the program for today's commissioning ceremony. The chief guest for today's function is Shri Rajnath Singh. The chief host for today's function is Admiral R. Hari Kumar, Param Vishisht K. Tripathi, Ati Vishisht Seva Medal, Nausena Medal, the Flag Officer, Commanding in Chief, Western Naval Command. The chief guest will thereafter be introduced to the controller of warship production and acquisition, Vice Admiral Kiran Deshmukh, Ati Vishisht Seva Medal, Vishisht Seva Medal, and the chairman and managing director, Mazgaon Dock and Shipbuilders Limited, Shri Sanjeev Singhal. The chief guest will then ascend the saluting dais and receive a general salute from a 50-man guard of honor. He will thereafter inspect the guard of honor and proceed to be introduced to the commanding officer designate of IMPHAL, Captain Kamal Kumar Chaudhary, and heads of department of IMPHAL, namely Commander Sunny Koka, the logistics officer, Commander Zoravar Singh, the executive officer, Commander Sibi Chakravarti, the engineering officer, Commander Shashidhar Rongali, the electrical officer, and Surgeon Lieutenant Commander Chaitanya Jha, the principal medical officer. Thereafter, the chief guest and the other dignitaries will embark on board and take their seats on the ship's helicopter deck. The gathering will then be addressed by the chairman and managing director MDL and then by the chief of the naval staff. On completion of welcome address by the CNS, the color guard will line up for the colors ceremony. The commanding officer of the ship will then read out the ship's commissioning warrant, following which the VIPs will take post behind the color guard for the colors ceremony. All guests are requested to stand during colors ceremony. Personnel in uniform are to salute when the band plays the national anthem. The naval ensign and the national flag will be hoisted with the commencement of national anthem, and the commissioning pennant will be broken on the mast of the ship on the last note of the national anthem. On completion of the color ceremony, the gathering will be addressed by the Honorable Raksha Mantri. On completion of his address, the chief guest will proceed to unveil the ship's plaque. The dignitaries will thereafter enter the ship for a walk around. The chief guest and the guests of honor will thereafter depart the venue at about 1500 hours. देवियों और सज्जनों, मैं सभी मेहमानों से अनुरोध करता हूं कि वे पूरे समारोह के दौरान अपने मोबाइल को बंद रखें या उन्हें फ्लाइट मोड में रखें। Ladies and gentlemen, may I request all guests to switch off their mobile phones or keep them in silent mode throughout the ceremony.
देवियों और सज्जनों, आइए अब हम भारतीय नौसेना पोत इम्फाल को जानते हैं। यह शानदार युद्ध पोत जो आपके सामने खड़ा है, इम्फाल 4 P-15 ब्रावो निर्देशित मिसाइल विध्वंसकों या डिस्ट्रॉयर में से तीसरा है। भारतीय नौसेना और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बीच 28 जनवरी 2011 को 4 प्रोजेक्ट 15 ब्रावो विध्वंसक के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह जहाज स्वदेशी जहाज निर्माण की एक पहचान है और दुनिया में सबसे अधिक तकनीकी रूप से उन्नत गाइडेड मिसाइल एक है। अपने अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों के साथ भारतीय नौसेना पोत इम्फाल भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े को और सुदृढ़ करेगा। P-15 ब्रावो जहाजों का डिजाइन भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा इन हाउस विकसित किया गया है। जहाज का निर्माण, जिसे MDL यार्ड 12706 के रूप में नामित किया गया था, 29 जुलाई 2014 को स्टील की पहली कटिंग के साथ शुरू हुआ। जहाज की कील 19 मई 2017 को रियर एडमिरल RK शेहरावत रिटायर्ड अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक MDL द्वारा रखी गई। जहाज को 20 अप्रैल 2019 को तत्कालीन नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा की पत्नी श्रीमती रीना लांबा ने पारंपरिक तरीके से लॉन्च करते हुए इम्फाल का नाम दिया था। जहाज को तैरने की अपनी क्षमता को मान्य करने के लिए बंदरगाह और समुद्र में परीक्षणों की एक व्यापक अनुसूची से गुजरना पड़ा है। जहाज का फाइनल मशीनरी ट्रायल्स 25 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। जहाज को बाद में 20 नवंबर 2023 को डिलीवर किया गया या औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। इससे पहले कि हम कार्यवाही के साथ आगे बढ़ें, मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वे स्क्रीन पर ध्यान दें, क्योंकि हम कुछ ही वक्त में आपके सामने इम्फाल की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। Let us now share with you the journey of IMPHAL, the splendid warship berth in front of you. IMPHAL is the third of 4 Project 15 Bravo Vishakhapatnam class guided missile destroyers. The contract for 4 Project 15 Bravo destroyers was signed between the Indian Navy and Mazgaon Dock and Shipbuilders Limited on 28 Jan 2011. This ship is a hallmark of indigenous shipbuilding and is amongst the most technologically advanced guided missile destroyers in the world. Combining stealth, maneuverability, firepower, endurance, a high degree of automation and crew comfort. With her modern state-of-art weapons and sensors, INS IMPHAL will add greater muscle to the sword arm of the Indian Navy, the Western Fleet. The design of Project 15 Bravo ships has been developed in-house by the Warship Design Bureau of the Indian Navy. The construction of the ship, designated as MDL Yard 12706, commenced with the first cutting of steel on 26 July 2016. The keel of the ship was laid by Rear Admiral RK Shrawat, retired CMD MDL, on 19th May 2017. The ship was launched into water on 20th April 2019 and christened as IMPHAL. The ship was subsequently delivered or formally handed over to the Indian Navy on 20th October 2023. I must highlight here that the time taken to build INS IMPHAL and to put her through sea trials is the shortest for any indigenous destroyer. This aptly highlights the maturity of our indigenous warship building ecosystem and the abundant synergy among all stakeholders. Before we move ahead with the proceedings, I would request the audience to pay attention to the screens as we present to you the journey of IMPHAL. हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम
commence sea trials in 164 meters long. Ladies and gentlemen, the CMD MDL has arrived. देवियों और सज्जनों, मझगांव डॉक एंड शिप बिल्डर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अब पधार चुके हैं। देवियों और सज्जनों, इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अजय युद्धपोत इम्फाल का परिवर्तीकरण भारत के अमृत काल में हो रहा है। जिस वर्ष भारत ने G20 की अध्यक्षता की, चंद्रयान 3 और आदित्य L1 को अंतरिक्ष में पहुंचाया और ऐतिहासिक ग्रीन बजट की घोषणा की। Ladies and gentlemen, thank you for joining us on this momentous occasion. Commissioning पारिवारिक महत्व के अलावा यह समारोह कमिश्निंग क्रू, शिप बिल्डर्स मझगांव डॉक एंड शिप बिल्डर्स लिमिटेड, वॉरशिप ओवरसीइंग टीम, मूल उपकरण निर्माताओं और कई लोगों की कड़ी मेहनत, ठोस प्रयासों, कारीगरी और दक्षता का भी प्रमाण है। आज गौरवान्वित कमिश्निंग क्रू, जहाज निर्माता और देखरेख करने वाली टीम का उसकी नौसेना द्वारा एक कमिश्निंग वारंट जारी किया जाता था, जिसमें उसे जहाज को चालू करने का निर्देश दिया जाता था जब उसे विश्वास होता था कि जहाज और उसका चालक दल तैयार है। इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए नामित कमांडिंग ऑफिसर को अभी भी नौसेना अध्यक्ष से जहाज का कमिश्निंग निर्देश देने वाला एक वारंट प्राप्त होता है। आप आज कमिश्निंग समारोह के हिस्से के रूप में नामित
Let us now share with you the journey of IMPHAL, the splendid warship berth in front of you. IMPHAL is the third of four Project 15 Bravo Vishakhapatnam class guided missile destroyers. The contract for four Project 15 Bravo destroyers was signed between the Indian Navy and Mazgaon Dock and Shipbuilders Limited on 28 January 2011. This ship is a hallmark of indigenous shipbuilding and is amongst the most technologically advanced guided missile destroyers in the world. देवियों और सज्जनों, नियंत्रक युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण पधार चुके हैं। Ladies and gentlemen, Controller Warship Production and Acquisition. The construction of the ship, designated as MDL Yard 12706, commenced with the first cutting of steel on 26 July 2016. The keel of the ship was laid by Rear Admiral R.K. Shrawat, retired CMD MDL, on 19th May 2017. The ship was launched into water on 20th April 2019 and christened as IMPHAL by Mrs. Reena Lanba, wife of then Chief of the Naval Staff, Admiral Sunil Lanba, in a traditional launching ceremony of breaking a coconut on the hull with an evocation in Sanskrit from the Atharva Ved to the goddess Aditi. देवियों और सज्जनों, नौसेना परियोजना महानिदेशक मुंबई पधार चुके हैं। Ladies and gentlemen, Director General Naval Projects, Mumbai. देवियों और सज्जनों, समारोह की गरिमा को बनाए रखने के लिए मैं सभी मेहमानों से पुनः अनुरोध करता हूं कि वे समारोह के दौरान अपने मोबाइल को बंद रखें या उन्हें फ्लाइट मोड में रखें। IMPHAL is a potent man of
war